We'll start. So, our today's topic is to study about copy arrays, how to copy arrays, ठीक है, how to view arrays. So basically, what we topic the topic we studied before was how to create sub arrays from an numpy array. सब एरेज मीन कि उसका एक छोटा सा पार्ट या हमने उसको में स्पेसिफिक एरे पार्ट हमें चाहिए या हमने इस पर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो वो हम किस तरह से गेट कर सकते हैं। अब इस तरह से है कि जब भी हम सब एरेज क्रिएट करते हैं या फिर आप कह लें कि स्प्लिट डाटा को किसी एरे में से ले रहे होते हैं तो एज अ व्यू हम उसको एज अ व्यू देख रहे होते हैं। तो उसको स्टार्ट कर लेती हूँ, आपको एग्जांपल के साथ जो है वो ये डिस्क्राइब कर दूँगी। सो फर्स्ट मैं रैंडम फंक्शन का यूज़ करते हुए एक एरे क्रिएट कर लूँगी। तो उसके लिए हमें पहले एक कमांड राइट करनी पड़ती है, दैट इज़ np डॉट वी हैव random dot seed and we will give it 0 value। तो बेसिकली हम ये कमांड इसलिए राइट करते हैं ताकि जितनी भी हम नंपाई एरेज क्रिएट करें जो कि सेम लेवल की होंगी या सेम डायमेंशन की, वो एक जैसी क्रिएट होंगी, मतलब उन पे वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होंगी। सो आई जस्ट क्रिएट एन एरे दैट इज x1। सो np डॉट रैंडम डॉट एंड इंट। सो इससे क्या होता है कि हम इसको जो भी वैल्यू देते हैं उस रेंज के अंदर रहते हुए हमारे पास एक एरे को क्रिएट कर देता है। और एरे किस तरह से क्रिएट होती है, जो भी हम उसको साइज है वो दे रहे होते हैं उस हिसाब से एरे क्रिएट होता है। सो आई जस्ट क्रिएट some arrays that is one dimensional, two dimensional and three dimensional। so 1 2 3। तो जैसे यहाँ पे इनमें डिफरेंस ये होगा कि हमने जस्ट इसका साइज डिफर करना है। एक वन डायमेंशनल एरे में साइज हम जस्ट उसके इंडेक्सेस का साइज देते हैं, ठीक है। और टू डायमेंशनल एरे के अंदर वी गिव द नंबर ऑफ रोज comma the number of columns that we want in our array। In a three-dimensional array we first give the number of three-dimensional array that will be in two-dimensional arrays that will be inside our three-dimensional array, okay। Next attribute is the number of columns of one 2D array and number of rows of one 2D array and number of columns of one 2D array। So I'll just run this, okay। Okay, I have did a mistake here. It was int, and I'll just show you that these are working. So all these array has been created. So move on to our topic. So our topic is right here sub arrays। मीन्स दैट कि इस तरह की सब एरेज क्रिएट करना जिसमें जस्ट डाटा को हम व्यू कर सकें, यानी कि हम डाटा को इसमें ये नहीं चाह रहे कि हमारे पास एक न्यू एरे क्रिएट हो जाए। एवरी न्यू सब एरे दैट विल बी वी विल क्रिएट विल बी अ व्यू ऑफ प्रीवियस एरे। तो जिस तरह से हमने लिस्ट टॉपिक में देखा था जब हम बेसिक पाइथन को पढ़ रहे थे कि हमारे पास जब हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं और उसमें से कुछ सब एरे क्रिएट करते हैं एंड दैट सब एरे if it is assigned if it is assigned to you can say a sub array, then it will be a copy of that array। So I'll show you with example here। For example, I'm going to do this operation on a two-dimensional array। This two-dimensional array I have created
right here. So I have just printed that array. So ये टू डायमेंशनल एरे को हम यहाँ पे इसमें से एक सब एरे जो है उसको क्रिएट करते हैं. सो आई राइट एक्स टू सब मीन्स दैट कि आई वांट कि हमारे पास जो फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है वो रोज का होता है, सेकंड एट्रीब्यूट कॉलम्स का. सो आई वांट के जो फर्स्ट हमारे पास 0 to 2 जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, वो ले लें और यहाँ से 0 to 2 कॉलम्स जो हैं वो एक्सेस हो जाएं. अब यहाँ पे 2 हम इसलिए राइट कर रहे हैं, अब जहाँ पे कॉलम एक्सेस होंगे तो हमारे पास 3, 5 and 7, 6 ये 4 वैल्यूज़ वो आ रही होंगी. वो किस लिए? क्योंकि हमारे पास हम हमेशा यहाँ पे जब हम लिमिट राइट करते हैं, एंड राइट करते हैं, हमेशा उसमें 1 ऐड करके राइट करते हैं. तो आई शो यू. अब इसको प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट होगी. तो सब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ये स्लाइस हो गई है एरे. इट मीन्स दैट कि जो स्लाइस हमने पहले पढ़ रहे थे कि उसी तरह का मैंने एक स्लाइस जो है वो क्रिएट किया. यानी कि इसको कह सकते हैं कि हमने सब एरे क्रिएट कर लिया है एक बड़ी एरे के अंदर से, उसमें हमने लिमिट देते हुए कि हमें कौन सी एरे चाहिए थी. अब हमें यहाँ पे इस एक वैल्यू को मैं जो हमने सब एरे क्रिएट किए यहाँ पे दैट इज x2 सब, इसमें मैं किसी एक वैल्यू को मॉडिफाई करती हूँ. अब मुझे एक्सेस करनी है वैल्यू नंबर 5. हमें पता है वैल्यू नंबर 5 जो है इस वक्त कहाँ पे पड़ी हुई है. हम कहते हैं x2 सब जो एरे है, ठीक है, इसमें इंडेक्स नंबर इस तरह से हम देखेंगे दैट व्हाट इज द इन विच रो दिस 5 वैल्यू इज इन. It's in row number 0 and column number 1. So I'm going to write that row number 0 and column number 1 में जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसकी जगह पे I will assign 88. तो इसका मतलब है कि 5 की जगह पे हमारे पास 88 जो है वो अपडेट हो जाएगा. अब हम ये कहते हैं कि दोनों एरेस में चेक करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास इस तरह से हो रहा है या नहीं. सो आई जस्ट प्रिंट द एक्स सब. अब आप देखें तो क्या हुआ है कि हमारे पास जहाँ पे 5 राइट किया हुआ था, हमने इंडेक्सिंग का यूज़ करते हुए 5 का हमने राइट की, इंडेक्स राइट किया और उसकी जगह पे हमने 88 को अपडेट कर दिया. और यहाँ पे हम देखें तो सब एरे में 88 जो है वो अपडेट हो गया. अब ये हमने जो सब एरे क्रिएट की थी ये x2 से क्रिएट की है. अब हम होना तो इस तरह से चाहिए था कि x2 पे कोई भी इफेक्ट ना हो, पर अगर हम x2 का अब प्रिंट करके देखें, I'll just print it here. और यू कैन सी दैट कि 80 हमने अभी x2 को कुछ भी नहीं किया था, हमने वैल्यू अपडेट की थी सब एरे के अंदर जो कि थी x2 सब. बट हुआ क्या कि हमारे पास जो एरे थी x2 जहाँ बेसिक से जिससे हमने सब एरे क्रिएट किया है उसमें भी वैल्यूज जो है वो अपडेट हो रही हैं. अब ये वैल्यूज अपडेट होती हैं जब भी हम सब एरे क्रिएट करते हैं स्लाइस मेथड से. स्लाइस मीन्स दैट वी गिव द इंडेक्स इन फॉर्म ऑफ लिमिट्स दैट कि कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ पे एंड होगी. सो इस तरह से अगर हम देखते हैं जैसे ये हमारे पास एरे नेम आ जाता है, कमेंट है एरे नेम, देन वी गिव द स्टार्ट कि कहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, उसका इंडेक्स कहाँ पे एंड हो रहा है. तो इस तरह से जब भी वैल्यू स्लाइस करते हैं ना तो हमेशा वो एज अ व्यू स्लाइस होती है. मीन्स के जो भी हम सब एरे इस x2 से क्रिएट करेंगे इस प्रोसेस के साथ, दैट विल ऑलवेज बी अ व्यू. इट मीन्स दैट कि जो भी हम एडिटिंग सब एरे में कर रहे होंगे वो हमारे पास x2 में भी सेम वही एडिटिंग जो है वो हो रही होगी. सो इस चीज़ को हम ये चीज़ें हमारे काम आती है. यानी कि अगर हमने एक सब एरे क्रिएट किया है, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि उसकी जब भी सब कोई चेंजिंग हो तो हमारे पास जो प्रीवियस एरे है जहाँ से सब एरे हमने क्रिएट किया उसमें भी वो चेंजिंग हो जाए, तो कॉपीज़ भी वहाँ पे इस्तेमाल होती है पाइथन के अंदर. सो इस तरह से है कि अगर मुझे नहीं चाहिए, मैं चाह रही हूँ कि जो भी मैं सब एरे क्रिएट कर रही हूँ उसमें अगर मैं वैल्यू को अपडेट करती हूँ तो वो वैल्यू हमारे पास मेन एरे में अपडेट ना हो. तो इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए हम
कॉपीज का जो मेथड है वो यूज़ करते हैं. सो आई शो यू हाउ टू क्रिएट दैट. सो वी आर क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ एरेज. तो हम एरेज की कॉपीज जो है वो किस तरह से क्रिएट करेंगे. सो सी दैट. सो नाउ अगेन अब हम दोबारा से एक कॉपी क्रिएट करते हैं. x2 हमारे पास एरे है जिसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ. ठीक है. इसमें से we are again going to create a sub array, but that sub array will not be a view of the x2 array, will be a copy. So if we use that x2 array जो है हमारे पास उसमें से index number, we will take the same index start to 2 comma column के कितने कॉलम्स मुझे चाहिए वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया. आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस array that is x2 sub. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टू रोज में से फर्स्ट टू रोज यानी कि 388 7 6 जो है ये डाटा हमारे पास यहाँ पे एज अ सब अरे क्रिएट होगा. बट ये हमने एज अ व्यू क्रिएट किया. अब मैंने अगर इसको बनाना हो कॉपी तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन राइट करते हैं दैट इज कॉपी. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन आई रन दिस कोड इट विल create a copy, not a view. So if I modify this 88 to 99, so I'll modify this. I'll say that x2 subcopy. इंडेक्स नंबर हमारे पास कौन सा है, रो नंबर कौन सी है ये वाली 0, कॉलम नंबर 1 2 0 2 1. तो यहाँ पे रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1 ये हमारे पास जो वैल्यू है उसकी जगह पे 99 को अपडेट कर दे. एंड वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस array. Print x2 sub सो हेयर यू कैन सी दैट के 88 की जगह पे हमारे पास 99 जो है वो अपडेट हो गया. अब हम चेक करते हैं कि ये जो अपडेट हुआ है हमारे पास सब एरे के अंदर क्या ये अपडेशन हमारे पास मेन एरे में तो नहीं हो रही है कहीं. सो विल चेक दैट. आई एम गोइंग टू प्रिंट x2 here again. You can see that the value is still 88. The updation in sub array has done no effect on the main array. So we can use both methods, the method of creating copies and the method of creating views as dependent on our demand on the program or project that we are creating. So both methods are useful. So we are going to move on to our next topic, that is reshaping of arrays. तो इस तरह से होता है कि एक एरेस हम मेथड से क्रिएट करते हैं जैसे कि हमारे पास दिए गए रैंडम और वंस एम्प्टी जो हम पहले यूज़ करते रहे. सो एक और एरे को क्रिएट करने का मेथड हमारे पास है. इस एरे को हम रीशेप भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से. दैट इज रीशेपिंग द reshaping the arrays. So I am going to create an array called here. तो इसको क्रिएट करने का प्रोसेस हम पहले लाइब्रेरी यूज़ करेंगे np जो numpy है जिसका हमने एलिस क्रिएट किया हुआ है. np डॉट ए रेंज हम यूज़ करते हैं. ठीक है. रेंज देने के लिए किस रेंज से तक हम एरे जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं. आई से दैट फ्रॉम स्टे इन बिटवीन 1 and 10 एंड रीशेप. अगर मैं जस्ट सिंपल इस तरह से राइट करूँगी तो आई गेट अ वन डायमेंशनल एरे. So I don't want a one dimensional array, I want a two dimensional array with values from 1 to 10. It means that कि जब array create होगी तो मेरे पास वैल्यू जो है वो 1 to 9 आएंगी. सो यहाँ पे हम 9 नहीं लिखते. अगर मैं यहाँ पे 9 राइट करती हूँ तो मेरे पास 8 तक वैल्यूज आएंगी यानी कि एक नंबर माइनस तक हमारे पास वैल्यूज आती हैं. सो वी शुड ऑलवेज राइट इन +1 here in the second attribute of the arrange function. So
dot. Next we are going to reshape it into a two dimensional array. So to do that हमें यहाँ पे शेप बतानी पड़ेगी कि हम किस शेप में रीशेप करना चाह रहे हैं. सो हम यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स देंगे, दैट इज रो. हम चाह रहे हैं कि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में ये हमारे पास रीशेप हो जाए, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में. So if I print this grid here, you can see that it has created um, an array from values 1 to 9, and it is in shape of 3 rows 1 2 3 and 3 columns 1 2 3 columns, as you can see. So if I show you, wait a second, we can also create three-dimensional arrays, 3D arrays from this method. So all we have to write is I'll create grid 2 is equal to np dot a range, और यहाँ पे हम रेंज दे दूंगी दैट विल बी 1 to 13, विच मीन्स दैट 1 to 12 हमारे पास वैल्यू जो एरे में है वो आ रही होंगी. डॉट रीशेप एंड इट विल बी टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल एरे. हमें वैल्यूज दे रही होती हैं इस तरह से दैट टू, हम चाह रहे हैं कि इसमें टू डायमेंशनल एरेज हो जिसके अंदर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स जो है वो प्रेजेंट हो. I'll just print it to. तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एरे क्रिएट हो गया जिसमें टू, हमारे पास थ्री डायमेंशनल एरे है. हम इसकी ब्रैकेट से यहाँ से देख सकते हैं दैट इज 1 2 3 ब्रैकेट में थ्री डायमेंशनल एरे. इट हैज़ टू 2D arrays 1 and 2 2D arrays that has every 2D array has 3 rows and 2 columns, 3 1 2 3 rows and 2 columns. So this is also a way to create or reshape our array. It can be very useful, but we have to look out for some things when creating these. For example, if you want to create an array, we should always keep in mind that what is the length of this array. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे इस एरे के अंदर. इट विल हैव 9 elements. So when we are doing reshaping, we should consider that the number of the number in which we are reshaping the array into should be equivalent to the number of element. It means that if we multiply 3 by 3, it gives us 9. So 9 is the element of this array. Now if we move on to here, we have 12 elements in our 3D array. We have 12 elements in our 3D array. So if we multiply 2 by 3, we get 6, and 6 by 2, we get 12. It means that this you know number of reshape should be equivalent to the number of elements that we have in our array. So what will happen if the number of elements is not the same? So हम यहाँ से इस तरह से भी array create कर सकते हैं. We can also create an array just by writing. I'll just create one np dot array. You just write this and some square brackets. I'll just create. So I have created an array that consists of 8 elements. अब यहाँ पे अगर हम रीशेप करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं. I'll just create a new variable. सो जिसको हमने रीशेप करना है उस एरे का नेम आ जाएगा डॉट रीशेप करके हम उसको रीशेप कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमने करना है 3 by 3 में रीशेप. अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 by 3 इट इज़ इक्वल टू 9, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स जो एरे के अंदर है वो 8 हैं.
सो ये चीज़ जब हम इसको करेंगे तो ये एरर दे रही होगी. सो यू कैन सी दैट. ओके. तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 8 इंटू शेप 3 इंटू 3. इट मीन्स दैट जिसमें हम रीशेप कर रहे हैं वो 9 एलिमेंट्स को कर रहे हैं, बट हम एरे के अंदर 8 एलिमेंट्स दे रहे हैं. सो ये प्रोसेस इस तरह से नहीं हो सकता. सो इस तरह हम किस तरह से इस चीज़ को कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए वी हैव टू गिव a specific index. Like I'll just copy it here. अब इस चीज़ को करने के लिए हमें ये करना है कि जो भी एरे हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें इंडेक्स हमें दे देना है. मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि मेरे पास टू, हमें पता है कि मुझे 2 रोज चाहिए, बट मुझे नंबर ऑफ कह लें कि कॉलम्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है कि कितने होंगे. यानी कि अगर आपको किसी एक एट्रीब्यूट का पता है और एक का नहीं पता, जिसके बारे में आपको पता है, इन्फॉर्म है, उसकी जगह पे वो आप राइट कर देंगे, और जिसके पास आपको कंफर्म नहीं है कि वो किस तरह से रीशेप होगी, वहाँ पे हम -1 राइट कर देंगे. इससे होगा क्या कि हमारे पास सिस्टम जो है वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली जो है एरेज के नंबर्स को डिवाइड करके सेट कर देगा. अगर मैं इसको रन करूँ और आई प्रिंट न्यू एरे हेयर, यू कैन सी दैट कि मैंने जस्ट -1 राइट किया था और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है एरे हमारे पास 2D में कन्वर्ट होके सेट हो गई है. सो इस तरह से इवन कि अगर मुझे नंबर ऑफ रोज का नहीं पता और कॉलम्स का पता है, आई कैन ऑल्सो राइट दैट. और ये हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो -1 एट्रीब्यूट है ये हम दोनों जगह पे नहीं दे सकते. हमें एक जगह पे कोई ना कोई रोज, नंबर ऑफ रोज या कॉलम राइट करने होंगे, और जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो हमें -1 पास करना होता है. वी कैन नॉट पास -1 टू मोर देन 1 डायमेंशन. Okay. We can also use a method to create, if we want to create or convert an array from a multi-dimensional array to a single dimension. It called flattening the array. So to flatten the array, all we have to do is, for example, I'll say that we have a new array and it is a two-dimensional array, and I want to flatten it to a one dimension. So to flatten it to a one-dimensional array, we'll just have to do, I'll say new array 2 is equal to that ar dot shape, um sorry, reshape -1. And what will it do? It will flatten the array, means convert a multi-dimensional array into a single dimension. And print new array 2, and you can see that it was a two-dimensional array like this, and now it is flattened into one dimension. So it can also be useful while doing some operations. Okay, so now we move on to, we have seen how to create arrays using reshape method, and now we can also create or reshape our arrays using a method called new access. So I'll just show you that how to do that. Say that x is equal to, let's say, array create कर रही हूँ यहाँ पे मैं जिसके अंदर
I'll create three elements. So to reshape it, I can use the reshape function like I'll say x dot reshape, and to reshape it I'll just give 1 by। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये टू डायमेंशनल में रीशेप हो गई है। यहाँ से हम ब्रैकेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो एरे है वो टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है। You can see it has one bracket and it has two brackets here. It means that it is a 2D array. So it is has been created into a two-dimensional array. We can also use another method called np.newAccess to create to reshape the array. So I'll reshape it. To reshape the array, write the name of array, square brackets, np, the name of numpy library alias. We have new access. First attribute and second attribute will be like this. अब यहाँ पे अगर हमने हॉरिजेंटली हॉरिजेंटली मीन हमने हॉरिजेंटली जो है इस एक्सेस में कन्वर्ट करना है। सो ये वाला एट्रीब्यूट जो है एन पी डॉट न्यू एक्सेस ये हम रोज वाली साइड पे देते हैं, और कॉलन वाला एट्रीब्यूट इट मीन्स दैट टू सेलेक्ट ऑल द वैल्यूज इट वी गिव इट इन द second attribute as the second attribute. So if I print this, it has also created a two-dimensional array. So if I want to create reshape this array into you can say vertically, it was horizontally, so vertically to convert that we can also use x dot reshape. I'll just switch the attributes that three columns and one row. So यहाँ पे हमारे पास ये देखें वर्टिकली जो है वो एरे को रीशेप कर दिया। इसी तरह से हम एन पी डॉट न्यू एक्सेस की मदद से भी ये वर्क कर सकते हैं। एक्स एरे का नेम, अब यहाँ पे फर्स्ट एट्रीब्यूट जो है वर्टिकली प्रिंट करने के लिए एरे को वो हम यहाँ पे कॉलन देंगे फर्स्ट में, एंड सेकंड में विल गिव एन पी डॉट न्यू एक्सेस, और अब हमारे पास जो है वो एरे वर्टिकली कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास तो ये इन दोनों प्रोसेस के साथ हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एरे कॉन्कैटिनेशन एंड स्प्लिटिंग। एरे कॉन्कैटिनेशन मीन्स अगर हमारे पास एक से एक या एक से ज़्यादा जो है वो एरेज हैं उनको कॉन्कैटिनेट करके एक ही एरे में कन्वर्ट करना, वो किस तरह से करेंगे, और एक एरे को मल्टीपल एरेज में डिवाइड करना, स्प्लिट कर देना, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हम ये काम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज एरे कॉन्कैटिनेशन एंड स्प्लिटिंग। सो फर्स्ट इज वी हैव कॉन्कैटिनेशन ऑफ एरेज। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे करना है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि दो एरेज क्रिएट करूँगी। सो दैट इज एक्स एंड वाई। एक्स इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे। तो ये हमें पता है सिंपल एरे क्रिएट करने का मेथड है, जस्ट एन पी डॉट एरे का मेथड हम यूज़ करते हैं। आगे ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वी राइट आवर वैल्यूज ऑफ आवर एरे, दैट इज 1 2 3, and I'll create another array called y np dot array. It will have values 3 to 1. तो ये दो एरेज जो हैं वो क्रिएट कर ली। अब इनको कंकैटिनेट करने का जस्ट सिंपल सा एक मेथड है, दैट इज np डॉट concatenate एंड जो भी एरेज हमने concatenate करनी है उनके नेम्स आ जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर को आपके पास फर्स्ट पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड द नेम ऑफ the arrays that we want to concatenate. So x को मैं concatenate करना चाह रही हूँ y में, x comma y. So their names will be separated by commas.
यहाँ पे हमारे पास दोनों एरेज जो हैं वो कंकैटिनेट होके एक ही एरे में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि मोर देन वन एरे जो है उसको भी कंकैटिनेट, तीन एरेज को भी एक साथ कंकैटिनेट करवा सकते हैं। सो आई क्रिएट अनदर एरे हियर और सी numpy dot array. तो इट हैज़ थ्री वैल्यूज। सो इसको कंकैटिनेट करने के लिए वही प्रोसेस यूज होगा, np डॉट कंकैटिनेट parenthesis bracket and the name of array that we want to call। अब यहाँ पे मैं चाह रही थी तीन एरे जो है वो कंकैटिनेट हो जाए, so they will get concatenation। Okay, I have to run this and then this. You can see that all the arrays has been concatenated, both three of them। Okay, अब हम यहाँ पे हमने अभी वन डायमेंशनल एरेज जो है उनको कंकैटिनेट किया है। हम कंकैटिनेट का जो मेथड है ये टू डायमेंशनल एरेज पे भी यूज़ हो सकता है। तो मैं क्या करें, यहाँ पे एक टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करूँगी। आई से दैट name grid np dot array bracket, the bracket where put values 1 2 3 double brackets 1 2 and comma। So here I created a two-dimensional array. To create a two-dimensional array, we have to put a bracket here and type our arrays, 1D arrays inside the 2D array. So I'll just concatenate here, that is np dot concatenate। यहाँ पे हम नेम्स राइट कर देंगे जो भी हमने कंकैटिनेट करनी है। मैं चाह रही हूँ कि ग्रिड कॉमा ग्रिड, यानी कि ग्रिड जो है वो दो मरतबा कंकैटिनेट होकर हमारे पास शुरू हो जाए। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये टू टाइम्स ग्रिड है वो कंकैटिनेट एक ही एरे में कंकैटिनेट हो गया। सो इस तरह से 2D एरेस को भी और 3D एरेस को भी कंकैटिनेट की मदद से एक ही उसमें कंकैटिनेट किया जा सकता है एक ही एरे के अंदर। तो अब यहाँ पे हम एक्सेस जो है उसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिंपल जिस तरह से राइट की हुई थी जिस डायरेक्शन के अंदर वैसी हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। बट मैं चाह रही हूँ कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो, सो वी कैन गिव एक्सेस while doing so। So I'll write np dot or I'll concatenate and we have concatenate करना है ग्रिड कॉमा ग्रिड को। यहाँ पे एक और हम एट्रीब्यूट देते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सिस इज इक्वल टू 1। सो इफ आई प्रिंट दैट यू कैन सी दैट कि अब हमारे पास एक्सेस 1 देने से क्या हुआ है कि ये सारी वैल्यूज जो है वो हॉरिजॉन्टली हमारे पास ऐड होगी। मीन्स दैट कि जो हमारे पास एरे थी यानी कि फर्स्ट रो combined with first row and second row combined with the second row, you can see here that पहले इस तरह से नहीं था। पहले कंप्लीट जो एरे थी वो ऐड हुई, फिर नेक्स्ट कंप्लीट एरे थी वो ऐड हुई। सो दीज आर द प्रोसेस दैट कैन बी यूज्ड इनसाइड आवर प्रोजेक्ट्स और कमांड्स। सो हमारे पास कुछ और भी मेथड्स हैं एरेज को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है वो कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और you can also call them np dot vstack and np dot hstack। np dot vstack for vertical stack and np dot hstack for horizontal
stack. So I'll just move on to that. तो यहाँ पे जो प्रीवियसली क्रिएट करी हुई है उसी को मैं यूज़ करूँगी, दैट इज़ ग्रिड एंड I'll use x. So I'll just print them here, print x, and तो यहाँ पे ये दोनों हमारे पास प्रिंट हो गई हैं, तो इन्हीं को भी आगे मैं यूज़ कर रही हूँ. सो आई जस्ट राइट np dot to vertically stack. I'll write here vertically stacks the array. So how to do that? That is our np dot v stack, and we write bracket square bracket and next the name of our arrays. और यहाँ पे मैंने दो ही arrays लिए हैं, that is x and grid. x के अंदर grid को हम ऐड कर लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास concatenate. अब पहले जब हमने मेथड देखे तो वो सिंपल जो है अभी यहाँ पे we have seen here new access. ये क्या कर रहा था, रीशेप पे जस्ट उनकी जो है वो कह लें कि एक्सेस को चेंज कर रहा है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. यहाँ पे कॉन्कैटिनेट भी होगा, यानी कि कंबाइन भी हो रही हैं, एंड देन जो है वो फिर एक वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जो है वो स्टैक हो रही है. सो फॉर यू हियर यू कैन सी दैट अब यहाँ पे हमारे पास यानी कि कंकैटिनेट भी हो गई हैं और वर्टिकली स्टैक भी हो गई. अब अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टली स्टैक करना है उसका क्या प्रोसेस होगा. आई यूज horizontally stack the array. To horizontally stack the array, we use np.h stack in the bracket here, square bracket, and the name of array that you want to stack. I'll say that grid, comma x. Okay. So to do that, they are saying that both the arrays should be two-dimensional to horizontally stack the array. So we'll do just like this. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्रिड एंड ग्रिड यानी कि टू एरेज जो है टू डायमेंशनल, यानी कि हमारे पास यहाँ पे सेम लेवल होना चाहिए. मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ ऑल एरेज शुड बी ऑफ सेम डायमेंशन. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अभी स्टैक के अंदर इस चीज़ का मसला नहीं होता. लेवल्स अगर चेंज भी हैं, यानी कि ये वन डायमेंशनल थी ये टू डायमेंशनल थी, तो ये उनको कंकैटिनेट करके डिस्प्ले करवा देता है. बट हॉरिजॉन्टल में हमें दोनों जो है वो सेम लेवल की या सेम डायमेंशन की चाहिए हो रही है. ठीक है. सर आई थिंक इतना इनफ है आज के लिए, तो बाकी कल इंशाल्लाह फिर. ठीक है सर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं.